साइड में जो बाउंड्री के ऊपर है, किया गया, खेला गया इस गेंद को, कोई रन नहीं मिलेगा। 17 ओवर की समाप्ति पर 80 रन 1 विकेट के नुकसान पर अफगानिस्तान। फर्क है, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जैसे जैसे अफगानिस्तान खेलता रहेगा वैसे वैसे वो अपने आप को सुधारते रहेंगे। इस बार अफगानिस्तान को कोई भी टीम हल्के में आंक नहीं रही है। मिशेल स्टार्क लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, थर्ड मैन में इस गेंद को बहुत आसानी से खेला। जब तक इस गेंद को मिशेल स्टार्क फील्ड करेंगे 1 रन और मिलेगा। तो 1-1 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत लंबा समय हो गया है। सुनील बताइए कितना समय से चौका नहीं लगा है? तो काफी समय पहले एक चौका लगा था पैट कमिंस की गेंद पे, जो स्कूप शॉट खेला गया था। मिशेल स्टार्क इस समय एक डीप फाइन लग है, डीप मिड विकेट है, बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर 30 गज के घेरे के अंदर ऑन साइड में 2 खिलाड़ी हैं, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग और एक डीप शॉट मिड ऑन। लेग स्टंप के बाहर तेज गति की गेंद, वाइड का इशारा, नीली जो लाइन है स्टंप्स के ऊपर उसको पार करके गई। 26 गेंद पहले एक चौका लगा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 26 गेंदों में लगातार चुप रखा है। लेकिन इन 26 गेंदों में रन कितने बने हैं सुनील, यह देखने की बात होगी। मिशेल स्टार्क लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लंबा रन अप है उनका, 30 गज के घेरे से भी 5 फीट के बाहर से दौड़ते हैं। काफी अच्छा स्मूथ एक्शन, लेग स्टंप के बाहर और फिर वाइड करार दी जानी चाहिए। बैट्समैन ने देखा एम्पायर की तरफ, लेकिन वहां गेंद निश्चित तौर से जो लाइन है उसके अंदर थी। तो 26 गेंदों में 18 रन बने हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय अफगानिस्तान के बैट्समैन रुक कर खेल रहे हैं और निश्चित तौर से उनमें से एक किसी को प्रयास करना होगा। लेकिन मिशन एक तरफ से मिशेल स्टार्क, एडम जाम्पा और उससे पहले पैट कमिंस गेंदबाजी कर रहे थे। तो बिल्कुल रोक के रखा है, ब्रेक लगा रखी है अफगानिस्तान की गाड़ी पे। ऑफ स्टंप के बाहर और ये हवा में थी गेंद, जोश इंग्लिश के क्लब से दस्ताने से निकलकर बाहर गिरी। 1 रन मिला मिशेल स्टार्क की इस गेंद पे। इब्राहिम बैट का किनारा था वहां पे, लेकिन गेंद बहुत बाहर थी। तो ऐसा कोई मौके जैसी इसको हम बात नहीं कह सकते। असल में विकेट कीपर के पहुंचने से पहले ही ये गेंद टप्पा खा चुकी थी। स्लोअर गेंद की थी, गति का परिवर्तन, और ये मिशेल स्टार्क की बहुत खासियत है, गति का परिवर्तन बहुत खूबसूरत तरीके से करते हैं। मिशेल स्टार्क लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बहुत अच्छा बॉलिंग एक्शन है, लेफ्ट लेग स्टंप के बाहर और इस बार फिर वाइड करार दी जाएगी। 2 वाइड कर दिए मिशेल स्टार्क ने इस ओवर में, और इतने अनुभवी गेंदबाज से जिन्होंने कि इतना लंबा समय से वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने 81 मैच खेले हैं अपने देश के लिए, 126 विकेट लिए हैं और 127वें का उनको तलाश है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हमसे दूर जाते हुए लंबा रन अप है उनका, काफी लंबी दौड़ लगाते हैं और इस बार ये गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जोश इंग्लिश ने हवा में लपकते हुए, उछलते हुए लपकने की कोशिश की बहुत, लेकिन उनसे दूर थी। और इसके साथ इब्राहिम जारदान के 50 रन पूरे। 50 रन उन्होंने बहुत अच्छे बनाए हैं। 50 रन बनाने में उन्होंने 62 गेंदों का सामना किया है और इस दौरान में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। तो इब्राहिम जारदान, ये सूचना सुनील की तरफ से। मिशेल स्टार्क, शॉर्ट गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड, तीसरी वाइड। इब्राहिम जारदान का यह 6ठा अर्धशतक है और इस वर्ल्ड कप में दूसरा है। धन्यवाद प्रकाश जी। 77 रन बनाए थे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ।
और अब मिशेल स्टार्क की गेंद का सामना रहमत शाह कर रहे हैं। रहमत शाह बहुत आक्रामक नहीं खेल पा रहे हैं, अभी तक उन्होंने अपनी पारी में कोई चौका भी नहीं लगाया है, लेकिन देखना है कि मिशेल स्टार्क इस ओवर में दिशाएं भगट रहे। ऑफ स्टंप के बाहर, फिर वाइड, चौथी वाइड, बहुत लंबा ओवर हो रहा है। सुनील, कितनी गेंदें डाल चुके हैं अब तक ये इस ओवर में? 9 बार गेंद डाल चुके हैं, जिसमें से 4 वाइड हैं और 5 गेंदें उनकी लीगल डिलीवरीज हैं, जो कि कानूनी तौर से मान्य है। तो 4 रन भी मिले और ओवर लंबा हुआ, और गर्मी का समय है, इतना लंबा ओवर करना मिशेल स्टार्क को निश्चित तौर से दिक्कत हो रही होगी। अब उन्होंने लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आने का फैसला किया है। ऑफ स्टंप के बाहर की इस गेंद को कवर्स में पंच किया, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है, लेकिन बहुत आसानी से इसको ट्रेविस हेड रोक लेंगे। उसको फील्ड करके थ्रो किया, बहुत अच्छा थ्रो, 2 रन के साथ ही, लेकिन स्कोर आगे बढ़ा। 18 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान 93 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेड। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजार। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। एडम जाम्पा सामने वाले छोर की तरफ से अभी तक कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन इस ओवर में क्या प्रभाव डाल पाएंगे, आइए अंग्रेजी में विवरण अमित अरोड़ा से। Thank you very much, Dr. Dinesh. After 18 overs, Afghanistan 93 for the loss of 1 wicket. Adam Zampa starting a fresh over. First delivery of the 3rd over, and the batter Rahmat Shah just taking a couple of quick steps. Hits that delivery to the offside. No run results. That was towards the point fielder. In that previous over, Stark gave away 13 runs. That included a lot of wides. And he's been struggling with wides initially as well, but interesting to see what approach he takes. Will he be continued by skipper on the other end? Adam Zampa bowls the next delivery, and no run results. He's picked up 19 wickets so far, Adam Zampa. Second on the list in terms of the leading wicket taker, right after Sri Lankan pacer Dilshan Madhushanka, who's picked up 21 wickets. After those first 2 games, Adam Zampa has come on his own. The leg spinner now bowls the 3rd delivery. And once again, use of step. This time the ball has been hit over the bowler's head. Hazelwood there fielding at the long off area will cut that off, and a single run results. Adam Zampa has impressed ever since that 3rd match in this tournament, and has been instrumental in the 5 successive wins that Australia has had. The partnership right now, 56 of 67 deliveries for the 2nd wicket between Rahmat Shah and Ibrahim Zadran. In comes Adam Zampa. This one on the off stump has been hit towards the covers area. Will be fielded by Warner there, and good fielding there by Warner. He returns the ball towards the bowler's end. 1 run results. Run rate right now 5.09. Afghanistan skipper will be happy with this effort, nearing almost 100 within 20 overs. And this partnership is critical. 57 of 68 so far. Ibrahim contributing 39, Rahmat 14, Zampa. This one in line with the middle stump has been hit back towards the bowler. No run results. So Adam Zampa 19 wickets so far in the tournament. And in the previous match against England contributed with the bat as well, and was good in the field, taking that outstanding catch in the outfield. So overall, all-round effort against England. Adam Zampa this time on the off stump. This has been a slight misfield there on the offside at the short cover area. Manas Labuschagne couldn't get the ball in the first go. That resulted in another single. So 3 singles of that Zampa over. Zampa so far has bowled 3 overs, given away 12 runs, hasn't picked up any wicket yet. So Afghanistan cruising along nicely here, building the partnership and ensuring that they can bat out full 50 overs and come up with a competitive total to put the scorecard pressure on Australia. Remember, Australia are 5-time ODI world champions, and they're peaking at the right time. Another bowling change. It's Travis Head who's being brought into the action. Travis Head, the left-handed batter, known primarily for his batting, and scored century against New Zealand at Dharamshala.
in 61 matches. He's picked up 16 wickets, so he's no mark with the ball. And sometimes they say that when you bring in part-time bowlers like Travis Head, you can often break the partnership as well. So a surprise change there by the skipper Pat Cummins, as Travis Head is going to bowl his first over. Rahmat Shah on strike. He's on 15 of 25 deliveries. So he's spent some time at the ground. As far as the dimensions are concerned, on the square is 66 and 61 meters. This one has been hit towards the leg side area mid-wicket as easy single for Rahmat Shah. Ibrahim now comes to strike. He's scored his 55 runs. He's the highest run getter for Afghanistan in this calendar year, Ibrahim Zadran. He's a young batter, 21 years of age. Travis Head now bowling to Ibrahim, which has been flicked over towards the leg side, square leg area for an easy single. So this is an interesting phase of the match where Afghanistan would like to not just retain the wickets but also increase the scoring run rate, given the part-time spinner Travis Head in operation. Another single there is something that Pat Cummins won't mind. This is the sixth bowler that Australia has used. Stark, Hazelwood, Maxwell, Cummins, Zampa, and now Travis Head. The fourth delivery hit back to the bowler. Good fielding there by Travis Head of his own bowling. Bowling with the shades on. It is pretty hot and the shades do help to focus more. In terms of the field, there's a short third, cover, mid-off. And on the leg side, there's a short fine leg and a mid-wicket as well. Around the wicket, Travis Head for the fifth time during this over. The ball has been hit towards the short mid-wicket area. No run results, so a dot ball. So 3 singles of the first 5 deliveries. That's a good first over by Travis Head. The last delivery of his first over around the wicket. This time to Ibrahim Zadran. And once again, it's been hit towards the mid-wicket area. No run results. So a very good over. 3 runs coming off it. And Pat Cummins will be very happy. When you have a part-timer like Travis Head who can squeeze in a couple of overs, it just gives that particular margin to the skipper that if any bowler is off mark, then that gives some comfort to the skipper. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. So the story so far from the Australia versus Afghanistan match here at WANKHEDE Stadium in Mumbai is Afghanistan skipper won the toss, decided to bat first, and Afghanistan after 20 overs are 99 runs for the loss of 1 wicket. The wicket that has been dismissed has been of Rahmanullah Gurbaz, who has scored 255 runs in the tournament so far. Ibrahim Zadran has scored 288 runs in the tournament. He's batting on 56. Right now on strike is Rahmat Shah. And it'll be Adam Zampa to bowl his 4th over. The leg spinner bowling from Garware end. Over the wicket, first ball to Rahmat Shah has been hit towards the offside area, point region, no run results. Adam Zampa bowled that delivery at 89 km per hour. He does have the stock delivery, the leg break delivery, and then the occasional googly with which he does pick up wickets as well. Adam Zampa, second delivery. Slightly short pitched, in line with the middle stump that has been hit towards the deep point area for a single. So 100 runs come up for Afghanistan with that single. 100 runs coming off 122 deliveries. Thank you very much, scorer Sunil Lanka. The first 50 came off 64 and the second 50 came off 63 deliveries. So it's almost identical in terms of the 2 50s that have come from Afghanistan. And Ibrahim Zadran batting on 56 of 68 deliveries. This one was on the leg side, should have been punished, but has just been hit towards the mid-on area for a single. Glenn Maxwell there, fielding at long off, just running in to pick up that particular ball. 2 singles so far of the first 3 deliveries. Zampa has been pretty economical in the 3.3 overs that he has bowled. In comes Zampa over the wicket from the Garware end, bowling to Rahmat Shah. This one in line with the middle stump has been hit towards the long on area. Once again, Glenn Maxwell coming into the picture. Another run gets added to the Afghanistan total. One day international is all about different phases of building your innings. The first 10, power play, and then consolidation phase. Zampa this time on the leg side
Ibrahim Zadran could not really hit that ball and take it to task. A dot delivery. He could have hit it towards the leg side, the square leg region, but missed out connecting with the ball. For one last time, Adam Zampa in his fourth over. This time a flighted delivery on the middle stump has been hit towards the offside, towards the cover area for another single. So 4 singles coming off the Zampa over. In his 4 overs so far, he's given away 16 runs. Hasn't picked up any wicket yet. Remember, he's one of the leading wicket takers, having picked up 19 wickets. So the 21st over comes to an end. A run rate of 4.90. Afghanistan 103 for the loss of 1 wicket. Sounds of dhol can be heard in the background as the spectators who have gathered here, they are backing their respective teams. Perhaps a little more support for the Afghanistan team, but there are people who love the Aussie kind of cricket and the consistency Australian team has shown over the decades. And it's the next over from Travis Head once again. He had given away 3 runs of his first over. That delivery has been hit towards the square leg area for an easy single. Partnership is building at 66 now of 83 deliveries. Travis Head bowling his second over. Travis Head missed out the initial part of the World Cup because of his thumb injury, but came back so strongly in Dharamshala to hit that century. Oh, this delivery by Travis Head. He's appealing to the umpire. Umpire is not interested. Australia has 1 review remaining. Will Pat Cummins take the review? Looks like it's not. They've already lost that 1 review they'd taken earlier. So Pat Cummins would like to retain that review. Travis Head comes in to bowl the 3rd delivery. This time good use of the feet. He has hit the ball in the air. It's sailing over the bowler's head. Another boundary. First boundary for Rahmat Shah. So our scorer Sunil Lanka tells us it's the first boundary for Rahmat Shah, who spent some time at the crease now. And this boundary has come after 32 deliveries. Thank you very much, Sunil Lanka, for telling us that shackles had to be broken. And this one was hit towards the long off area. And Mitchell Starc had no chance whatsoever to get to that ball. Once again, Travis Head, and this time a reverse sweep was attempted. And the fielder Mitch Marsh is running after the ball. He does manage to stop the ball, but not before the batter run for a brace. 2 more runs get added to the Afghanistan total. A good over for Afghanistan this. Travis Head, a part-time bowler, was economical in his first over, but in the second over, Rahmat Shah realizes that they have to milk his bowling. So getting that boundary first and now another 2. This delivery of Travis Head has been hit towards the leg side area, towards the mid-wicket. Another dot ball. And this is the final delivery now. Travis Head around the wicket to Rahmat Shah has been hit towards the mid-on area for another single. So Head has given 8 runs of his second over, 11 runs of the 2 overs so far. And Afghanistan, after 22 overs, 111 for 1. And it's the Nelson figure. Dr. Dinesh, do you believe in Nelson? I definitely do not believe, but the famous English umpire used to definitely believe it, and there have been instances जहाँ पे वो टेस्ट मैच में हमेशा जब भी नेल्सन आता था तो जंप करते थे. डेविड शेफर्ड. बिल्कुल बिल्कुल. Used to just jump. तो मैंने सोचा कि एक पहेली आपके लिए बुझाया जाए, लेकिन डेविड शेफर्ड हमेशा ही, और मैंने देखा है खुद उनको कमेंट्री के दौरान. तो बहुत मैं समझता हूं अमित, एक इंटरेस्टिंग फेज है. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी पकड़ मजबूत कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान जिस तरह से रन बनाना चाहता है, हालांकि विकेट नहीं खो रहे, ये उनके लिए अच्छी बात है, पर अफगानिस्तान फिलहाल इनको कुछ ना कुछ तो जैसे पिछले ओवर में किया, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि गेंद वरना रन आगे आगे बनाने मुश्किल हो जाएंगे. Well, like you said, from Afghanistan perspective, they've got 9 wickets in hand. Both the batters are doing very well. Captain Shahidi slated next is among runs, and now we've got Glenn Maxwell beginning the next over. राइट आर्म ओवर द विकेट. ग्लेन मैक्सवेल ने इस बार माफ कीजिएगा राउंड द ओवर राउंड आने की उन्होंने फैसला किया. बैटर पैड को साथ मिलाकर बॉलर्स बाय पुश राउंड द विकेट. ग्लेन मैक्सवेल डीप मिड विकेट में खेला. एडम जाम्पा ने बहुत तेज दौड़ लगाई.
अपने दाईं तरफ जाते हुए, लेकिन एक रन आसानी से मिलेगा रहमत शाह को। 27 पर पहुंचे इब्राहिम, 59 रन बनाकर 72 गेंदों में। 22.2 ओवर का इस समय खेल हो चुका है। तीसरी गेंद 23वें ओवर की डाली ग्लेन मैक्सवेल ने, जिसको मिड विकेट में खेला। पैट कमिंस जब तक इसको फील्ड करेंगे, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। ग्लेन मैक्सवेल, जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत तेजी से अपना ओवर खत्म करते हैं और सामने वाले छोर की तरफ से लगातार राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर की इस गेंद को बहुत आसानी से खेला। ग्लेन मैक्सवेल, एडम जाम्पा, ट्रेविस हेड, वो रन जरूर 4-5 ही दे रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के बैट्समैन पर कोई असर नहीं डाल पा रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल इस ओवर में 5वीं बार राइट आर्म राउंड द विकेट, बैटर पैड को साथ मिलाकर शॉट मिड ऑन की तरफ खेला, आराम से फील्ड कर लिया गया इसको, कोई रन नहीं। और ना ही कोई रहमत शाह और इब्राहिम जादरान ने कोशिश भी की, कोई इरादा भी जाहिर नहीं किया। ग्लेन मैक्सवेल राइट आर्म राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर की इस गेंद को फ्लिक किया कलाइयों के सहारे, जैसे कि एशियन सब कॉन्टिनेंट के श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के ये बैट्समैन बहुत अच्छा खेलते हैं। कलाइयों के सहारे 1 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 ओवर की समाप्ति पर 115 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अफगानिस्तान। तो अब देखते हैं कि सामने वाले छोर की तरफ से तो ग्लेन मैक्सवेल गेंदबाजी कर रहे थे, हमारे वाले छोर की तरफ से यानी कि कमेंटेटर बॉक्स छोर की तरफ से किसको लाया जाता है। गेंदबाजी में एक परिवर्तन तो निश्चित तौर से वहां होगा। स्टॉइनिस दिख रहे हैं, स्टॉइनिस जो कि मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं, ज्यादा तेज गति से गेंद करते नहीं है, लेकिन उनकी लाइन और लेंथ बहुत अच्छी रहती है। उन्होंने 68 मैचेस में 47 विकेट लिए हैं, 3 विकेट 16 रन देकर उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो गेंदबाजी ठीक ठाक कर लेते हैं वो। मार्कस स्टॉइनिस, ये गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, मार्कस है उनका नाम पूरा, मार्कस स्टॉइनिस, बहुत अच्छे हैं, खिलाड़ी हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं आईपीएल में भी काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वानखेड़े स्टेडियम पर इस समय थोड़ी सी गर्मी कम होती हुई, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जैसे जैसे सूर्य देव पश्चिम में जाएंगे, हमारे दाईं ओर अब वो अस्त होने की तैयारी में है। अरेबियन सागर की तरफ हमारे दाईं तरफ समुद्र है। राइट आर्म ओवर द विकेट स्टॉइनिस, लेग स्टंप के बाहर दिशा भटकी गेंद आ रही है, मिड विकेट में 1 रन मिलेगा बहुत आसानी से और इस 1 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ जाएगा 116 अफगानिस्तान का। स्टॉइनिस के लिए जो फील्ड रखी है वो बहुत दूर फैली हुई है, कैच लेने की स्थिति में कोई खिलाड़ी नहीं है विकेट कीपर के सिवाय। एक डीप थर्ड मैन है, एक डीप पॉइंट है। ये 2 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के बाहर बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर है। मार्कस स्टॉइनिस राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत अच्छा शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के पास, ट्रेविस हेड के पास, शॉट मिड ऑन पर, जो कि 30 गज के घेरे के ऊपर फील्डिंग कर रहे थे। तेज स्ट्रोक था, ओवर पिच गेंद थी, कलाइयों के सहारे इसको बहुत तेज खेला बैट्समैन ने, लेकिन वहां पर कोई मौका इसलिए नहीं बना रन का क्योंकि वो सीधा का सीधा जाकर उनसे सीधा रुका। और इस बार बॉलर्स बैक पुश, बॉलर ने खुद अपने फॉलो थ्रू में इसको फील्ड किया, हाथ से छितरा कर गेंद मिड ऑफ में आई। दोनों बैट्समैन एक बार उन्होंने सोचा कि कुछ शायद वो रन के बारे में सोचें, रहमत शाह और इब्राहिम जादरान ने, लेकिन जैसे देखा कि मार्कस स्टॉइनिस बिल्कुल तैयार हैं, अगर उन्होंने कोई गलती की तो वो स्टंप तुरंत गिरा देंगे और एक बैट्समैन को वापस जाना पड़ेगा पवेलियन में। उन्होंने कदम वापस खींचे और एक बार फिर बिल्कुल उसी गेंद की पुनरावृत्ति, बैटर पैड को साथ मिलाकर बॉलर्स बैक पुश, फिर हाथ से छितराई गेंद स्टॉइनिस के, लेकिन मिड ऑफ का फील्डर जो खुद पैट कमिंस है वो तैयार थे और उसने ये गेंद को फील्ड कर लिया। अच्छा ओवर डाल रहे हैं स्टॉइनिस, ज्यादा रन नहीं दिए उसने, इसमें उन्होंने एकमात्र रन दिया है तो बांध कर रखा है। और ये
परेशानी का सबब भी हो रहा है रहमत शाह के लिए, लेकिन स्टॉयनिस ने जो लंबाई और दिशा, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप बॉलिंग कर रहे हैं, ज्यादा तेज गति के गेंदबाज नहीं है, 30 गज के घेरे से थोड़ा सा अंदर से दौड़ना शुरू करते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, लेग स्टंप पर आती हुई इस गेंद को लॉन्ग ऑन में खेला, आराम से बहुत सहजता से 1 रन लिया। 2 रन इस ओवर से आए हैं, 117 रन 1 विकेट के नुकसान पर 24 ओवर के बाद अफगानिस्तान। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. तो इस बीच जो अफगानिस्तान के बैट्समैन हैं, उन्होंने कुछ स्थानापन्न खिलाड़ी से, सब्स्टिट्यूट प्लेयर से कुछ मंगाया। असल में ग्लव्स बदले हैं, और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, गर्मी बहुत है, नमी बहुत है, ह्यूमिडिटी काफी है। इस समय भी लगभग 36 तो नहीं होगा, लेकिन 33-34 के करीब टेम्परेचर है। ग्लेन मैक्सवेल राइट आर्म राउंड द विकेट, सामने वाले छोर से हमारी तरफ आते हुए शॉर्ट गेंद, पहले से तेज गति की गेंद की हुई, ऑफ स्टंप के बाहर इसको हल्के से लॉन्ग ऑफ में पुश किया। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन आसानी से मिलेगा। अब जो स्कोर प्रिडिक्टर है उसके हिसाब से 295 अफगानिस्तान बना सकता है, और अगर 295 अफगानिस्तान बनाता है या उससे अधिक, 300 सवा 300, तो एक बहुत अच्छा स्कोर होगा। यह देखते हुए कि अफगानिस्तान के पास 4 उच्च कोटि के स्पिनर हैं। और यह गेंद शॉट, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, इसको रोक लिया जाएगा। 2 रन लेकिन आसानी से मिलेंगे। काफी खराब गेंद थी, मैं समझता हूं ग्लेन मैक्सवेल भाग्यशाली रहे, इस बार उन्होंने ओवर द विकेट आने का फैसला किया था। शॉर्ट गेंद का जितना फायदा लेना चाहिए था रहमत शाह को, उतना ले नहीं पाए, प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं कर पाए, लेकिन इब्राहिम थे, लेकिन फिर भी 2 रन मिले। तो 3 रन 2 गेंदों से ग्लेन मैक्सवेल की इस ओवर में आ चुके हैं। ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को जानबूझकर ऑन साइड में खेला। ऑन साइड में जो डीप मिड ऑन का फील्डर है वो काफी लंबा है, उससे दूर है, स्क्वायर है, उसे अपने बाईं और दौड़ लगानी पड़ी। 1 रन लेकिन आसानी से मिलेगा। अपने 6ठे ओवर में ग्लेन मैक्सवेल कभी राउंड द विकेट, कभी ओवर द विकेट, और इस बार इस गेंद को हवा में उछालकर खेला है और गेंद सीधा फील्डर के हाथ में और आउट। बहुत देर से ग्लेन मैक्सवेल फ्लाइट कर रहे थे, रहमत शाह को ललचाने की, लुभाने की कोशिश कर रहे थे, और ये ऑस्ट्रेलियाई टीम का बिल्कुल मैं कहूंगा खास होमवर्क है। वो बिल्कुल उन्होंने प्लान करके, योजना करके, गेंदबाजी में कुछ खास बात नहीं थी, लेकिन वो बैट्समैन की कमजोरी को भांप चुके थे। बैट्समैन की कमजोरी पे उन्होंने होमवर्क किया हुआ था, और तभी ग्लेन मैक्सवेल बार बार राउंड द विकेट आ रहे थे, जब भी रहमत शाह आ रहे थे, और इब्राहिम जादरान को ओवर द विकेट कर रहे थे, कभी राउंड द विकेट, कभी ओवर द विकेट, लेकिन वो ऐसा नहीं किसी योजना के तहत कर रहे थे। और उस योजना के तहत रहमत शाह ने बहुत सिंपल साधारण कैच थमाया, और अब हशमत जो कि कप्तान है, हशमतुल्लाह शाहिदी 71 मैच खेल चुके हैं, 2057 रन उन्होंने बनाए हैं, और काफी लंबा अनुभव है। कीनिया के खिलाफ उन्होंने शारजा में डेब्यू किया था। बाएं हाथ के बैट्समैन हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल का जहां तक सवाल है, उनके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑफ स्पिनर आमतौर पे बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन अब रहमत शाह ही सामना करेंगे गेंदबाजी का। तो हशमत शाहिदी ने कुछ बातचीत की। हशमत शाह को एम्पायर ने कहा कि आप ही जाकर स्ट्राइक लीजिए, और अब वो एम्पायर से गार्ड ले रहे हैं। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि व्यवधान काफी लंबा है, जैसे कि बैट्समैन आए हैं तो उसके बाद थोड़ा, क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के पानी इत्यादि लेकर आ गए, अफगानिस्तान के भी खिलाड़ियों के लिए, दूसरे खिलाड़ी के लिए, जादरान के लिए पानी लाया गया। अब फील्ड सेट कर रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल, उसमें काफी समय ले रहे हैं, और देखना है अब ये क्या गेंदबाजी करते हैं।
ओवर द विकेट करेंगे या राउंड द विकेट करेंगे। जिस तरह की व्यू रचना है उससे तो लगता है कि ये राउंड द विकेट गेंदबाजी करने वाले हैं। हशमत शाह को 2 गेंदों का सामना करना होगा अगर वो इस गेंद पर रन नहीं लेते। जो हशमत शाह के लिए फील्ड लगाई गई है इसमें एक शॉर्ट थर्डमैन है, एक शॉर्ट पॉइंट है, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद लेग स्टंप पर आती हुई ग्लैन मैक्सवेल के लिए खेला गया। हशमत शाह ने कोई रन नहीं मिलेगा वहां पे। हसमत शाहिदी ने, पूरा नाम हसमतुल्लाह शाहिदी है, कल उनसे बात हुई थी, उनके बारे में हम बात करेंगे। 1 रन के साथ ही खाता खोला कप्तान शाहिदी ने। लॉन्ग ऑफ में खेला इसको कोई दिक्कत के बिना, और दूसरा विकेट अफगानिस्तान का गिरा। मैं समझता हूं पूरी प्लानिंग और योजना के साथ 25 ओवर के बाद 122 रन 2 विकेट के नुकसान पे। जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेड। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजार। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। तो इस तरह से 25 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पैट कमिंस हमारे वाले छोर की तरफ से गेंदबाजी के परिवर्तन के तौर पर ट्रेविस हेड की जगह पर वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, हसमत शाहिदी को अमित अरोड़ा। Thank you very much, Dr. Dinesh. So it's skipper bowling to skipper. This time all around the wicket, in fact, and that was a short delivery. Hashmat Shahidi just lets that delivery go to the keeper. No run results. So the second wicket that fell for Afghanistan was Rahmat Shah, and he was disappointed with that particular shot that he played because he was well settled. He had made 30 of 44 deliveries, a cautious 30 he had made. Just 1/4 of it, but good bowling effort by Maxwell, getting rid of Rahmat Shah. That has brought the skipper onto the crease, who now faces the next delivery. Another short ball. This time it's been hit towards the leg side area, just pulled it towards the square leg area for a single before Mitchell Starc could pick up that delivery and throw it back to the keeper. Hashmat Shahidi now moves to 2. He has already scored 282 runs so far in the tournament. That includes 350, so he's been in form as far as batting is concerned. And after him, it's Asmat, Nabi, Ikram and Rashid still to go. So Afghanistan does have the batting depth. And as far as Australia is concerned, they've used 7 bowlers: Starc, Hazelwood, Maxwell, Cummins, Zampa, Head and Marcus Stoinis. Right now, it's skipper Cummins bowling his 4th over. This one, a good length delivery in line with the off stump, has been hit towards the close by fielder in the short cover area. No run results. So Cummins, 3 deliveries in this 4th over of his, has given away a single run. Skipper has bowled a good line and length, Pat Cummins. Mitchell Starc has been a spot of concern in the first spell that he bowled today of 3 overs. Didn't bowl any extra, but when he was brought on again for the second spell, he gave away too many wides, and that forced skipper to bring in Travis at first, then Stoinis to cover up some of the overs. In comes Cummins, a good length delivery once again in line with the off stump that has been hit towards the point region, and we've got the fielder there, Sean Abbott, who is the substitute fielder. He's a good fielder and restricting that particular shot to just 1 run. So 2 singles so far from the first 4 deliveries. Pat Cummins is keeping it tight, and skipper Hashmat and Ibrahim would want not just to stitch a partnership but also accelerate that run rate, which currently is at 4.83. This is the 26th over in progress for the Afghanistan innings. They have made 124 runs and they have lost the wicket of Gurbaz and Rahmat Shah. Ibrahim Zadran, the other opener, batting well on 66 of 81 deliveries. Hashmat Shah, Hashmatullah Shahidi, who's just come in at the fall of second wicket. He's batting on 2, having a closer look on the fielding arrangements. He's ready to face Pat Cummins. Around the wicket this time. Short delivery, and Hashmat lets it go to the keeper. So a dot ball. Clearly Pat Cummins and company have the recipe of short ball to the Afghan batters, and checking their ability to cut or pull, and every dot ball does add to the pressure.
The first wicket put up 38 run partnership of 48 deliveries. And the second wicket of 83 run partnership of 100 deliveries as Cummins bowls this one on the pads of Hashmat Ullah Shahidi, who hits it towards the gully fielder, Mitch Marsh. No run results. That ball did have a speed of 143 km per hour. So Pat Cummins, a very good over comes to an end, just giving away 2 singles. In 4 overs so far, Pat Cummins has given away 16 runs, hasn't picked up any wicket. And Afghanistan 124 for the loss of 2 wickets after 26 overs. So that partnership figure of 38 for the first and 83 for the second wicket. Thank you very much to our scorer Sunil Lanka for helping us with those partnership stats. Afghanistan would certainly like to build a competitive total. You can have a look at the other matches that have happened in WANKHEDE. On Saturday 21st of October, South Africa beat England at this venue by a whopping 229 runs. South Africa batting first had made 399 for the loss of 7 wickets. In comes Glenn Maxwell with his first delivery on the middle and leg has been hit towards the long off area. And before Mitchell Starc could field and send it back to the bowling end, 1 run results. And in reply, England scored 170. They were all out for 22 overs. So certainly under lights there is some movement of the ball. But as far as Afghanistan is concerned, they only have 1 pacer with them, Naveen-ul Haq, and the part-time pace of Azmat Omarzai. But primarily they have 4 spin attacks. So it'll be interesting to see how they bowl in the second innings. But right now it's Glenn Maxwell bowling his 7th over. Has given away 29 runs, picked up the wicket of Rahmat Shah in the previous over. Maxwell around the wicket this time. A flighty delivery on the pads of the skipper Hashmat, who easily hits it towards the leg side area for a single. So 2 singles of the first 2 deliveries. Glenn Maxwell coming into bowl over the wicket, this time to Ibrahim Zadran, who hits it back to the bowler. No run results, a dot ball. Ibrahim Zadran has scored 299 runs in this tournament, and with a single he'll complete 300. Just 21 years of age. Surely he's going to be serving Afghan batting for long. 5th delivery of the 27th over. Glenn Maxwell bowling a stump to stump line, again has been hit back to the bowler. No run results. Glenn Maxwell bowled that delivery at 91 km per hour, and he comes in for the last time of this over. Again in line with the off stump. This has been driven towards the offside, towards the covers area, and 2 run results on that last delivery of Maxwell's 7th over. So 4 runs of this over. Afghanistan after 27 overs, 128 for 2. The second match that happened at this venue was on the 24th of October. South Africa again. This time they were up against Bangladesh, and South Africa won by an overwhelming margin of 149 runs. This was a Quinton de Kock show, 174 coming off his bat. 382 for 5 is what South Africa amassed, and Bangladesh could manage only 233 before getting all out. So the sides who batted first, they've scored 399, 382, and when India met Sri Lanka at this venue on the 2nd of November, India scored 357 for 8. Shubman Gill scored 92. Virat got a half century. So did Shreyas Iyer. And Sri Lanka could manage only 55. So batting first here, Afghanistan taking a cue from those 350 plus scores for the first 3 matches they were played at WANKHEDE. Would certainly like to hit that 300 figure mark. In comes Cummins to bowl his 5th over. Short pitch delivery straight away. And Hashmat Ullah Shahidi says, thank you very much. Just ducks down and lets the ball go to Josh English gloves. No run results. Pat Cummins very clear with his strategy here. Now Hashmatullah Shahidi and Ibrahim Zadran at the center of the pitch. Exchange of words, deciding what should be the strategy. Because continuously we are seeing the Aussie bowlers bowling short balls, and the idea will be to connect that ball and play some pull or a cut shot. Once again, Pat Cummins around the wicket. Once again a short delivery. This time the batter attempts a shot. The keeper could not field it. It goes to the boundary. 4 runs. Signals the umpire. Welcome boundary that for Afghanistan. Hashmatullah with that boundary moves to 7. This was a short delivery. This time Hashmatullah decided not to duck but to play, and was able to get some connection with the delivery. Yes, he did. And it flew off past the keeper for 4 runs.
Pat Cummins. Will he go for a third short ball in succession? Pat Cummins running away from us. And this one was a good delivery. A dot ball going into the gloves of Josh English, the keeper. Mitch Marsh is also another option who Pat Cummins could rely on for a couple of overs. Marcus Stoinis has bowled as well. So has Travis Head. Not sure whether Mitchell Starc today will be completing his full quota, given that in 1 over he bowled 4 wides. Pat Cummins, 4th delivery of his over, running away from us around the wicket to skipper Hashmatullah Shahidi. Over pitch delivery. This has been hit towards the offside area. And the fielder there at the covers, Glenn Maxwell, fielding that. Manas Labuschagne is at the backward point. Mitch Marsh has short fine leg. Travis Head at mid wicket. Adam Zampa is fielding at the mid on. So 3 dot deliveries in the first 4 deliveries, and the second one was hit for a 4 towards the fine leg area. In comes Pat Cummins for the 5th delivery this time. Running away from us around the wicket to Shahidi, who just taps it towards the offside area, gully area. Manas Labuschagne bouncing on that delivery, and no run results. Afghanistan would like to give a competitive challenge here now that they are batting first. It was a good toss to win for the Afghan skipper, and he did say during that toss that the wicket looks good, and in the second innings they could get some assistance from spin. So if they want their 4 spinners to weave a trap around the Aussie batters, they would like to score good total here. Pat Cummins, another shot here. It has been hit towards the square leg region for another single. Global rights holder. So at this current rate, which is 4.75, the score predictor says Afghanistan would reach about 238. That is not what they'll aim at. At 6 and over, they'll reach 265, and at 8 and over, they'll be getting to about 309. Dr. Dinesh, do you think that 300 is the figure that the skipper Hashmatullah Shahidi will have on his mind? Because look at how South Africa scored 399, 382, India scored 357, batting first on